So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss very important topic because basically it has been very much in the news. I hope you all are aware, which is related with Operation Sindoor. So the military equipments that were actually used, or the gadgets, whatever you can say, the Rafale Jets and others, the equipments galore and technologies galore. So whatever was there in the news, we will discuss that in today's class, because I think it becomes more important because it was coming in the news again and again. And that is why this class is specifically for that. In fact, some of them were previously asked also in CLAT. I think in 2020, they had asked questions related with some of the topics, which was recently in the news. So what I've decided is I will discuss previous year question also, and I will check whether you are able to understand the PYQs or not. Is the class getting stuck or is it fine? Okay. So let us begin. Because yes, there was some issues. I think I'm audible, visible, everything is fine. Okay, let's move on. So देखो इसमें से एक दो में से ना question आया है. We will discuss that. But before that, there is one question. You have to tell me. Please read the question and answer me. I'm not giving option because I have already taught you this. Name the agreement between India and Pakistan where it was agreed that both will settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations. Which agreement I'm talking about? Yes, Kushagra Saxena, you're right. The answer to this question is, please everyone write. Simla Agreement or Shimla Agreement, you can say. It's a main word for bilateral negotiation. It means if we have to talk, if there is actually any issues or any problem between India and Pakistan, that will be solved between the two nations, and there should not be no third party intervention. So that we had also discussed a separate class for that, है ना? Why I'm discussing it, because recently पहले आप देख सकते हो, exact statement मैं आपको दिखाता हूँ. This was the statement: settle the differences by peaceful means through bilateral negotiations. Okay, and this was coming in the news, like what is Simla Agreement that ruled out the third party mediation. Okay, and why I'm discussing it, because recently Donald Trump has said something related with that he is interested in offering help as far as Kashmir issue is concerned, etc. So that is why it was very much in the news, that there should not be any third party agreement and all, and a third party interference. तो मैंने एक पूरा क्लास डिटेल क्लास बनाया है. ठीक है, आपको जाना है, जस्ट यूट्यूब पे सर्च करना सिमला अग्रीमेंट करियर लॉन्चर, यू विल गेट दिस वीडियो. ठीक है, एंड व्हेन यू गेट दिस वीडियो यू कैन वॉच इट. ठीक है, एंड प्लीज वॉच इट बिकॉज दिस इज वेरी मच इन द न्यूज. अभी कुछ दिन पहले भी 1 week 10 days back also it was in the news, and that is why I had discussed about Simla Agreement. Okay. Now, so yes, no party third party intervention. In fact, former DGP of Jammu and Kashmir had also said this. So ये news में आ रहा था. That is why I am discussing it. Let's move on. है ना, आप देखो, है ना, India has a long-standing policy of following the Simla Agreement or Simla Agreement of not allowing anyone else actually as far as dialogues are concerned and all. ठीक है. It also includes one more thing. कि we should not raise this anything like Kashmir issue or any issue in SAARC, BIMSTEC or any other places. किसी भी international grouping कहीं भी बात नहीं raise किया जाएगा, because that is considered as between the two only. Okay, that is what you should be knowing. है ना. So अगर आपको ये देखना है तो आप जाना, you can go in the live section. Also, है ना, नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Simla Agreement. ठीक है, go down. We have already discussed it. Okay, let us begin. I have told you that since it is a part of a previous year question, I'll be giving you a previous year question also. Please read this PYQ. This is of CLAT 2020, but of course, even today also it holds some relevance. So please read it. I'm giving you 1 or 2 minutes, and after that, I will ask questions. Is the class getting stuck? Is it true that the class is getting stuck?
No, sir. I don't know why on my phone it is showing stuck. That is why I'm asking. Okay, let me open it. Correct. Please read it. If you are done, then write yes, done. Okay, this is about the first time when Rafale Jets were brought. We had done a deal of 26 Rafale Jets worth rupees 59,000 crore. 36 Rafale Jets, sorry, at that time. We're talking about 2020. Okay. And so that was in the news, and also after that the exam happened and they asked the question. So the first question is, the Rafale deal between India and France is seen to carry great strategic significance. Which of the following is directly impacted by the deal? What is the answer? And I think it was very easy answer. Please answer me. Right. देखो बहुत इजी था. देखो पूछे इंडिया और फ्रांस की बात, यहाँ पे चाइना कहाँ से आ गया? One Belt One Road initiative is related with China. And do you think India will do any military deal, especially aircraft deal with China? No. The Chinese initiative of Silk Route नहीं. ये दोनों Belt and Road initiative, इस पर मैंने क्लास लिया. I've already taken a class on Belt and Road initiative. ठीक है? Trade of Middle East इसकी बात नहीं हो रही. यहाँ इंडिया फ्रांस लिखा है, यहाँ इंडिया फ्रांस साफ लिखा हुआ है. So it's very simple, crystal clear. Please the right answer. Yes, many people have answered. Krishi Sachdeva, Priyanshi Goyal, Kushagra, Pranshi, Adrija, you are all right. Let's move on to the next one. Indian Air Force is also in the process of procuring a new generation medium-range modular air-to-ground system HAMMER. देखो ये thumbnail में भी ये नाम है. And this was coming in the news recently in the last 4 or 5 days. If you're reading newspaper, you must have come across this term called as HAMMER. What does the term HAMMER stands for? ये भी न्यूज में था. Anyone? Because I expect you. चूंकि न्यूज अगर आप अखबार पढ़ रहे हो, yes, Pranshi Govil, Krishi Sachdeva, Kushagra, Adrija. The right answer is actually B is the right answer. Highly agile modular munition extended range. नहीं, loitering ammunition से related नहीं है. ठीक है. I'll discuss that. Nothing to worry. मैं बताता हूँ. ये जो है ना hammer we will discuss further. ठीक है. अभी तो मैं PYQs discuss करा रहा हूँ. Then we will discuss about hammer. I'll explain. I will show the photo also. ठीक है. The next one is, which of the following has been replaced by one in the passage? Okay, so what is there one in the passage? So let's go back to the passage and see. पीछे चलते हैं passage में, और यहाँ पर देखो लिखा है the fighter jets built by French aviation firm One took off from this. Yes. Now अब यहाँ पे One की बात हो रही है. It is actually asking the company of France which manufactures this the Rafale jet. Yes, and I think you all can answer it very easily. So the answer is Dassault Aviation. C is the right answer to this question. Yes, Priyanshi, Krishi Sachdeva, Koshagra, Pranshi, Govil, Hari, Adrija, you are right. Yeah. Now the next question was, which of the following indigenous organization is responsible for design, assembly and fabrication? Indigenous मतलब क्या होता है? अपने country में, अपने मुल्क में, within India, of combating aircrafts in India, है ना? So जिसको हिंदी में देसी कहते हैं, अपने मुल्क का. Which organization, or what we call it as the best example of Make in India, you can say. And this is a very old company, however. DRDO. We had discussed few days back. If you are watching my class, I'm sure you must be aware of that. What is the answer? बताइए. Yes, Priyanshi Goyal. Kushagra Saxena also provides for repair facility. Yes, Priyanshi Goyal, right? DRAI नहीं होगा. The answer is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. मैंने आपको बताया भी था. DRDO manufactures defense equipments. ठीक है.
तो कुछ हम रफ आइडिया दे रहे हैं ताकि एग्जाम में कराए तो कैसे डिफेंस इक्विपमेंट जैसे टैंक हो गया, ठीक है, कोई मिसाइल हो गया, अगर ये सब रहे, या इवन कोविड के टाइम पे तो वेंटिलेटर ही बना रहे थे, बट दैट वाज अ स्पेसिफिक इमरजेंसी केस, बट जनरली स्पीकिंग, है ना, टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, इस टाइप की चीज जो होती है, दीज आर जनरली मेड बाय डीआरडीओ। हाल जो है ना, इसका फुल फॉर्म ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स का मतलब ही होता है हवाई जहाज से रिलेटेड, है ना, लिमिटेड, which is headquartered in Bangalore. It manufactures jets in India. Please tell me one famous jet, very famous jet manufactured by HAL in India. नाम बता सकते हो? एक बहुत फेमस जेट है इंडिया का जिसको हाल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ PYQ? बिकॉज इट इज अगेन इन द न्यूज, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें न्यूज में आ रही घूम फिर के, जेट्स, फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑल। नहीं, मिग जो है ना, ये रशिया से हम लोग लेते हैं। मिग 21 वाज आई थिंक सेकंड या थर्ड जनरेशन, फिर मिग 29 हो गया, मिग 35। दिस इज मिग का जितना वर्जन होता है, ये सुखोई, ये सब जो है ना, रशिया का होता है। द क्वेश्चन वाज नेम वन जेट which has been manufactured by HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यस आदित्य, राइट। आपने नाम सुना होगा LCA तेजस, कई बार न्यूज में आता है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन डी, इसरो क्या चीज के लिए काम आता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इसरो? यस तेजस, वेरी गुड, पीपल आर राइटिंग तेजस। हाँ, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज कई बार क्या होता है, हो सकता है आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता हो, बट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन एंड कॉमन सेंस यू विल रीच टू द आंसर, ठीक है। हर बार सारे का आंसर परफेक्टली पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस और ऑप्शन एलिमिनेशन से पॉसिबल। यस, इसरो लॉन्चेस लॉन्च व्हीकल फॉर स्पेस। लॉन्च व्हीकल या रॉकेट्स को लॉन्च करते, वो स्पेस के लिए लॉन्च करते हैं, दे आर कंसर्न अबाउट स्पेस, लाइक फॉर एग्जांपल चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 एटसेट्रा, है ना। देन वी हैव आदित्य L1 मिशन, पोलर सैटेलाइट, PSLV, GSLV, जितने भी रॉकेट्स होते हैं वो इसरो लॉन्च करते हैं। ये वाला रॉकेट अलग है, प्लीज बी केयरफुल। डीआरडीओ जो रॉकेट बनाती है वो अलग होता है, ये रॉकेट वो मिसाइल वाला रॉकेट है, ठीक है। समटाइम्स यू हैव टू क्लैरिफाई, ये जो रॉकेट है इसको द रॉकेट लॉन्च बाय इसरो इज एक्चुअली लॉन्च व्हीकल, वो स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट होता है। इज इट गेटिंग स्टक? पता नहीं, आई डोंट नो, लाइक मेरे मोबाइल में स्टक कर रहा है और जब मैं लैपटॉप में चेक कर रहा हूं इट इज फाइन। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। आई हैव चेंज्ड द टाइमिंग आल्सो फ्रॉम 6 to 5:30. Yes, like in my mobile it is getting stuck, but in laptop it is fine. Mirage है वो, MIRAGE, Mirage, I think we buy from France. Let me check. हाँ, we'll discuss it, Mirage, ठीक है ना। ठीक है, now let's move on to the next one. I know अब क्या करना, I don't understand, because I'm checking on my laptop, the class is fine, but it's creating problem in my mobile phone. Rafale jets are which generation fighter jets? We'll discuss about Mirage, आएगा वो भी, है ना। The right answer is, देखो अगर 4th generation लिखा है तो 4th मार्क करना, but if 4.5 is written तो go for this, ठीक है। So C is the right answer, 4.5 generation aircraft. Yes, Krishi Sasdeva, Kushagra Saxena, Pranshi Govel, you are right. C is the right answer. That's 4.5 generation aircraft. And if you read about Rafale jets, it is actually manufactured by Dassault Aviation from France, है ना। It's a twin engine, ये कभी कभी हो सकता है पूछ दे, है ना। Then multi-role aircraft, है ना, built by Dassault Aviation. And that is what you should know, we have bought from France, है ना। 4.5 जनरेशन में आता है, ठीक है। 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट का ही पार्ट है, पर उसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन होता है, तो दैट वी कॉल इट एज 4.5 जनरेशन, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट डिस्कस करते हैं लिटिल बिट, ओके। सो द फर्स्ट जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह में होता था, जिसका जैसे ME-262 ये सब नाम हुआ करता था। सो दैट वाज फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, ठीक है। पिस्टन इंजन होता था, इतना डिटेल नहीं जाना, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए। एंड जैसे सुखोई, है ना, मिग 15 वगैरह, देखो मिग वगैरह जितना भी होता है ना रशिया से लिया हुआ होता है, ठीक है। ओके प्रियांशी, नो प्रॉब्लम।
ठीक है ना. द नेक्स्ट इज सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट. सो सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट में MiG-21 आया था. I hope you are aware of MiG-21. We are still using it, but now we are planning to phase out, है ना. Someone is asking about Mirage. तो देखो क्या फ्रांस के Dassault की बनाई जाती है Mirage भी, Mirage 3 etc. ठीक है. So MiG-21 जो है, even today this is a second generation aircraft. और आपको पता है इसको ना, it is famously called as flying coffin, widowmaker. I am sure you must have heard it because ये बहुत आसानी से even without any attack from enemy side it can fall. मतलब इसमें बहुत सारे issues हैं. It is quite old and all. I hope you are aware of that. And देखो after 60 years and 400 crashes, MiG to retire. तो ये सब न्यूज आ रहा था. Why are we still using MiG and all? MiG-21 ये सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट है. कई पेज में देखो यहाँ पे लिखा है कि अपग्रेड करके बाद इसको थर्ड जनरेशन के बराबर बना दिया गया था. ठीक है. So that is what you should know. Is it getting stuck? I think लैपटॉप पे नहीं स्टक कर रहा होगा because but मेरे मोबाइल में स्टक कर रहा है. Then we have to find some other timing. I don't know why. हाँ, देखो इस तरह की न्यूज आ रही थी. How are the MiG-21 fighter jets being phased out? Because it was originally a second generation aircraft upgraded to third generation, but of course these were very old and of course it was not very effective now. Okay. Then we are having third generation aircraft. उसमें जैसे MiG-23 है, MiG वगैरह जो MiG है, सुखोई है, Su-17 ये सब रशिया का होता है बना हुआ. ठीक है. That is what you should be doing. So these are some of the third generation aircraft. एक rough idea होना चाहिए because aircraft ये सब चीजें न्यूज में थी. That is why we are discussing. Then fourth generation aircraft में जैसे सुखोई 27 है, Harrier है, जितने भी अब आ गए, Rafale Jets वगैरह भी इसी में आ जाएगा. अगर आप Rafale वगैरह में मतलब 4.5 में आता है, थोड़ा सा अगर आप if you add these things instead of fourth generation it becomes 4.5 generation. Okay, that is what you should know. ठीक है. तो जैसे तेजस है अभी we are using, this is also a part of fourth generation and all. ठीक है. 4.5 या 4.5 generation, fourth या 4.5 generation कह सकते हो. That is what we belong to this Tejas aircraft also. ठीक है. Now let's talk about like F-16 which is made by Lockheed Martin. This is a fourth generation fighter jet and I think Pakistan also I mean America sold this to Pakistan earlier also. Then this was also in the news. ये पता होना चाहिए बस ये न्यूज में था. You should know that. ठीक है. That JF-17. This is also a fourth generation aircraft which is used by Pakistan along with this is manufactured by Chengdu Aircraft of China. So this was also in the news. Just remember these terms. इसलिए कि जब आप न्यूज पढ़ोगे अखबार पढ़ोगे तो ये terms आ रहे थे JF-17, J-17, F-16. Okay. Rafale. So these things were coming in the news. And that is why I'm discussing it. कि एक rough idea होना चाहिए कि F-16 is made by Lockheed Martin, US-based company, fourth generation aircraft, which are used by Pakistan. Similarly, JF-17, fourth generation aircraft, manufactured by Chengdu Aircraft Corporation of China. Okay, so JF-17, J-17 as the word लिखते हैं. That is what you should be knowing about. Okay, है ना. J-10, J-17, जहाँ भी J करके हो ना, J-10, J-17, then J-20, so समझ लो चाइना का ये. टर्म्स जो है ना ये सब न्यूज में आ रहे हैं. सो जस्ट रिमेंबर दैट, है ना. तो जैसे JF-17 को कहीं पे 4.5 जनरेशन लिखते हैं. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग, है ना. तो ये सब फोर्थ जनरेशन है ना. J-10 हो गया, HL तेजस, Dassault एविएशन, MiG-29 वी हैव बॉट फ्रॉम रशिया, है ना. सो 4 या 4.5 जनरेशन में ये सब आते हैं. फेमस वंस है तो बहुत सारे, बट दीस आर द प्रोमिनेंट वंस दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट, है ना. Then Sukhoi Sukhoi 30, again we have bought from Russia, 4.5 generation aircraft. लेकिन इसके ऊपर का जो है, this is 5th generation aircraft and this is with 3 countries. अच्छा बताओ तो which 3 countries are having 5th generation aircraft? There are currently only 3 countries having 5th generation aircraft. Mitsubishi, अच्छा उस पर नहीं जाना है. Mitsubishi is not that much famous, को छोड़ दो. That was not in the news. जो न्यूज में रहता है मैं सिर्फ उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ. Otherwise there are lot of jets, है ना. Mitsubishi I think जापान का होगा, बनाते होंगे. I don't know, like I have not read in detail. Yes, US, चाइना और रशिया के पास है 5th generation aircraft. Okay, जैसे US का ये काफी है, काफी न्यूज में रहता है अक्सर. Lockheed Martin is a US manufacturing firm. It makes F-35 and F-22. ये दोनों Raptor इसको कहते हैं शॉर्ट में. So Raptor jets, 5th generation aircraft. Okay, so basically US का एक है,
देन चेंगडू J-20, ये J-35 ये चाइना का बनाता है और Su-57 जो है रशिया का है, सुखोई 57 हम लोग के पास we have bought Su-30, Sukhoi 30 is there which we have bought from Russia, but Su-57 we have not bought. This is a 5th generation aircraft, ठीक है, तो that is what you should know. और अभी 6th generation तो आया भी नहीं, तो 5th generation aircraft में क्या होता है, ये सब होता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है ना, stealth मतलब है कि it is very difficult to be caught in the radar etc. प्लस इसके जो है ना बहुत स्मूथ होता है इन द सेंस कि इसमें ना आपको ना ड्राइवर जो पायलट होता है, नॉट ड्राइवर सॉरी, द पायलट होता है, इट हैज टू गिव वेरी लेस इंफॉर्मेशन, मतलब वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना एयरक्राफ्ट खुद से हैंडल कर लेगी, ठीक है. So it is I have read in detail and all, I got to know that yes, it is comparatively very easy to handle in the sense कि आप सारा इंफॉर्मेशन दे दो, वो अपने आप हैंडल कर लेगा. So I mean of course the more advanced the technology goes, the more easier it becomes to handle etc. ना. So in a fighter with super maneuverability, है ना, super maneuverability मतलब बहुत smoothly move करेगा, है ना, that is what the idea is. So this is what you should be knowing about it, ठीक है. So this was in the news. अब देखो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस स्कैल्प, हैमर, देखो लिखा ना, ये 8 मई की न्यूज़, और हैमर पर पीवाईक्यू पूछ दिया था क्लैट में 2020. ओके, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इफ दीस टर्म्स आर इन द न्यूज़, स्कैल्प, हैमर, कामिकाजे ड्रोन, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है, पूरा रिसर्च नहीं करना है, बट यू शुड हैव रफ आइडिया अबाउट दैट. ओके, सो लेट अस बिगिन विद स्कैल्प मिसाइल. You have to tell me it is manufactured by whom. Why is Russia not able to capture Ukraine? Krishi says they were the reason perhaps is they have, Ukraine has got support from Europe and America. In fact, before Donald Trump, it got a lot of support. Okay. What is the answer? Is the class getting stuck? Because I could see the class is stuck. Yes, what is the answer? Scalp missile. This was recently in news. Yes, MBDAC is the right answer. ठीक है, कहाँ की कंपनी है? तो ये स्कैल्प मिसाइल, स्टॉर्म शैडो भी इसको कहते हैं, हो सकता है स्कैल्प मिसाइल वाले पूछ लें. स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प मिसाइल, रिसेंटली इन न्यूज, MBDA, ठीक है. ओके, so it is manufactured in France. MBDA is a company. It's a European company and headquartered European national multinational corporation headquartered in France. ठीक है, इससे पहले इसका दूसरा नाम था Matra Bay Dynamics and other companies, सब मिल करके ये बनी है MBDA. So just remember it. ठीक है, so scalp missile was very much in the news and that is why we have discussed. The next is hammer. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया hammer, highly agile modular munition extended range. ठीक है, hammer bombs ये जो भी कह लो. हाँ, Scalp was used by India, of course. I think Rafale Jets में लगा के भेजा गया था, as far as I could remember. और Jets में डाल के अटैक किया मारा था, ठीक है ना. Then hammer, of course, this is also used in Rafale Jets. Highly agile modular munition extended range. This was the full form was PYQ, है ना, of CLAT 2020. Now this question can be asked. It is developed by which company? Again, the answer is, देखो ये वाला जो है ना, ये राफेल जेट नहीं है, ये राफेल, इसकी स्पेलिंग अलग है. राफेल जेट की स्पेलिंग होती है RAFLELE. दिस इज अ फ्रेंच जेट. राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो इजराइल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, समथिंग सिमिलर टू DRDO समझ सकते हो, ठीक है. Adani Defense System is there, MBDA. So the right answer is Safran Electronics and Defense System, again from France. So this has manufactured hammer. D is the right answer. Okay. तो आप देख सकते हो हैमर मिसाइल, ये बॉम्ब जो भी आप कह लो उसको, is a French all-weather smart air to defense standoff weapon developed by Safran Electronics and Defense. ठीक है, that is what you should know it, है ना. So the right answer is D. Let's move on, है ना. देखो अब जब मैंने इसके मैन्युफैक्चर पे गया तो ये देखा कि साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस सिस्टम भी लिखा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इंडिया की कंपनी है, इसके साथ मिलकर भी लोगों ने बनाया. सो जस्ट रिमेंबर दिस एज वेल, ठीक है.
Let's move on to the next one. Which of the following is the most appropriate term to be used for kamikaze drones? ये भी न्यूज में था, मैंने आपको दिखा दिया. I've shown the newspaper, है ना. Yes, कृषि सर, देखो यूएवी तो सब कोई भी ड्रोन को यूज किया जाता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट टू बी यूज्ड इज लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं या सुसाइड ड्रोन्स. हाँ, यस. इसका मतलब क्या हो, लॉइटरिंग म्यूनिशंस या कामिकाजे ड्रोन, है ना. तो होता क्या है, जैसे मान लो कि ये ड्रोन है, ठीक है, और ये खुद जा करके मान लीजिए ये एनिमी का टारगेट है, तो करेगा कि खुद जाके इसमें जाके टकरा जाएगा. दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ कामिकाजे ड्रोन इज. लॉइटरिंग म्यूनिशन मतलब पहले आसपास घूमेगा, देखेगा कहां पर टारगेट पे जाके तो वहां से गिर जाएगा. You know, that's called as loitering munition. Kamikaze drone या suicide drones कहते हैं. B is the right answer. ठीक है. और SSBN तो ये तो सबमरीन के लिए टर्म यूज किया जाता है, ये तो यहाँ है भी नहीं. UAVs होते हैं नॉर्मल किसी भी ड्रोन को कहते हैं, मतलब कुछ आ जाएगा इसमें. बट द मोस्ट परफेक्ट आंसर ऑफ कामिकाजे ड्रोन शुड बी B, है ना, loitering munitions. ठीक है. So that is what you should know. है ना, कामिकाजे ड्रोन्स ना, इन्हें खुद जा करके वो टकरा जाएगा उसी टारगेट पर. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो, लॉइटरिंग म्यूनिशंस. तो अभी जैसे ये न्यूज में था, आई होप यू आर अवेयर, बाइकर ऐसे पूछ सकते हैं, बाइकर यीहा 3 रिसेंटली इन न्यूज इज व्हाट, ऐसे पूछ देंगे. सो व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएवी? अनमैन्ड एरियल व्हीकल. अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसको ड्रोन आप कहते हो. ठीक है. So Baikar Yeha was actually used by Pakistan. Kamikaze. This is also a kamikaze drone. Similarly, what is the and perhaps it is said that it is from Turkey. We are not 100% sure, but whatever I could see and all from the way iska kuch malba hai, the debris of that debris. And now, please tell me the kamikaze drones used by India. Uska naam kya tha? Kamikaze drone used by India. What is the name of that? Is the class getting stuck or is it fine? पता नहीं फोन में क्यों मेरा स्टक दिखा रहा है. Please tell me, kamikaze drone used by India, and from which country we have bought? Harop drones उसका नाम था, ये काफी न्यूज में था. ये Harop drones. Heron नहीं यूज किया गया था, I think Harop यूज किया गया था, ये वाला Harop drones. 3 things about UAV, है ना. It is also a loitering munition, again वही kamikaze drone, suicide drones, है ना, kamikaze drone. That is what you should be knowing. Okay. Built by which company of Israel? Anyone? तो ये है, ये ड्रोन है Harop drone. Okay, Harop drone, loitering munition, है ना. These are the terms, the same terms which are used. And the answer to this question is IAI. So its answer Israel Aerospace Industries. This has manufactured this Harop drone. Okay, that is what you should be knowing about. Now, the next question is, it was also very much in the news, from which country we have bought S-400 defense missile system? Russia, US, Israel, or France? Please tell me. And what is its range? हाँ, पता होगा, Russia is the right answer. S-400 से 400 किलोमीटर का रेंज है ना. Yes, कृषि सत्यवा त्रिजा, you all right. Tanvi. अब देखो इसमें होता क्या है, ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे एनिमीज लॉन्चिंग एट मिसाइल, तो ये क्या करेगा, तो अपने सिटी में गिर जाएगा, तो ये अटैक करेगा एंड इट विल किल इट, न्यूट्रलाइज इट. So that is the idea of S-400. It acts as a defense mechanism from the enemy's target and all. Okay, so this you should know. S-400 we have bought from Russia. So it was also coming in the news that these were used in recent conflict. Okay, yes, Anna.
इट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। देखो सरफेस टू एयर क्यों, क्योंकि जमीन से मार रहे हैं, और एयर में मान लीजिए एयर से कोई आ रहा है मिसाइल, उसको मार रहा है ना, एयर में कोई मिसाइल उसको गिराना है, तो दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो ये सब करके टर्म दे सकते हैं, इट इज सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और समथिंग लाइक दैट, एंड इट इज डेवलप्ड बाय अ रशियन कंपनी कॉल्ड एज एनपीओ अल्मास। ठीक है, इससे पहले S-300 था, तो छोटा होगा उसका लिमिट है ना, 300 किलोमीटर। देन द अपग्रेडेड वर्जन इज कॉल्ड एज S-500, बट वी हैव बॉट S-400। ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट, है ना। तो ये डिजाइनर है, ये मैन्युफैक्चरर, अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है। Now, let's ask some more question. What is the name of the code of operation launched by India in response to the Pahalgam terrorist attack? I am expecting everyone to answer it, and I have not given option because I believe that you all should be answering it. इसका आंसर बताइए। Everyone. Yes, कृषि सचदेवा, त्रिजा, कोशाग्रा, you are right. Operation सिंदूर, है ना, ये आपने देखा भी होगा, justice served. This was tweeted by army, है ना, Operation सिंदूर. I'm sure you must be all be aware of it. Yes, very good, good. People are writing, Dhanvi, you are right. Now, there is one more question, because what happens is sometimes the question maker are very smart. So question maker knows that, okay, now everyone knows Operation Sindoor. So sometimes I have seen in some exam this type of thing done by the question maker, that they ask the reverse question. They ask, okay, what was the name of the operation launched by Pakistan to counter Operation Sindoor? Because this very few people know. इस तरह कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मेकर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं जो सबको उसका आंसर नहीं पता हो, बिकॉज उनको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर तब बच्चे बच्चे को पता है, तो ऐसा करो, कुछ और क्वेश्चन पूछो. सो समटाइम्स दीस थिंग्स हैपन, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. Bunyan something. Yes, Kripsi Sachdeva, very good. At least you will answer it if you get 4 options. ठीक है, anyone else? ठीक है, ठीक है, तो ये मैं इंडिया टुडे के आर्टिकल में ही दिखाता हूँ. ऑपरेशन बुनियान अल-मरसूस, just remember it. I know it is difficult to remember, but कोशिश करना कि याद रख लेना. हाँ, yes, yes, कुशाग्रा, right, very good. And इसका मतलब होता है, मीनिंग भी कहीं लगा होता है, a structure made of lead. That is according to Al Jazeera, though it means this. ठीक है, they have translated in Arabic, but इतना नहीं माने उन्हें नहीं पूछेंगे, ये पता होना चाहिए बस. Just remember this term, that what is the name of the operation. या ऐसे ऑपरेशन हटा दें, बोले बुनियानुल मरसूस recently in news is related with what, and then give 4 options. तो ये आपको पता होना चाहिए. Yeah, they can ask directly like this. ठीक है, okay. Now let's talk something about BrahMos. तो देखो actually क्या है, tomorrow's class will be having class tomorrow also. देखो 5:30 में भी start हो रहा है, तो मैं देखता हूँ if there is any other time we will schedule the class. हाँ, बुनियानुल मरसूस का the structure made by lead. That is what Al Jazeera has translated. ठीक है, खैर, तो tomorrow we'll be having a class on INS Vikrant. You know INS Vikrant, I hope you are aware. So I will discuss INS Vikrant. ठीक है. Second thing I'll be discussing it is ranks in military. Why I'm discussing? Because अगर आपने have you seen the press conference done by the military officers, है ना, from all the 3 armed forces, है ना, so army, navy, air force, so the like lieutenant general, colonel, brigadier, wing commander, ये सब term news में था, है ना, vice admiral. So yes, तो अब उनके बारे में नहीं, उनकी रैंकिंग के बारे में I'll discuss little bit, because maybe they can ask, क्योंकि ये टर्म अभी न्यूज में, मिलिट्री से रिलेटेड टर्म्स पूछे जाने की संभावना है. ठीक है, यस, हाँ, यस, वेरी गुड. हाँ, so there are chances that they can ask questions related with military, or the terms, terminologies, rankings related with military also. ठीक है, we will discuss in tomorrow's class. Plus I've decided to discuss about BrahMos a little bit also. ठीक है, okay. Now one more thing just I wanted to ask, we'll discuss this tomorrow, but please answer it, find out the answer. Tomorrow I'll discuss it. What is the name of the country in which we have exported BrahMos? To which we have exported BrahMos. ठीक है, this is the homework, go and find out. ठीक है, I'll be discussing tomorrow. I'll see कि अगर कोई और timing हो, because even at 5:30 also the class is getting stuck, so I think we need to find out some other timing. देखता हूँ. ठीक है, so this is all about today's class, and find out, we will be provided recorded video, write it in that comment.
ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, उसके नीचे कमेंट में आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।